मॉड्यूल 13 डे 7 लास्टिंग इम्प्रेशंस लेकर मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे इन्फॉर्मेशन में गाइड करूंगी। तो प्लीज मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, ओके। और सिचुएशन है, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए में। पार्ट ए में आपका लेसन ऑब्जेक्टिव में है, आपका कवर लेटर से रिलेटेड है, ओके। सो इसको आपको ध्यान से समझना है। कंसीडर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोजिंग अ प्रोफेशनल कवर लेटर। सो इसको अच्छे से समझ के अपने लेटर को लिखना है। देन इसी से जो भी आपका इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो इम्प्रेस हो सके, इसलिए आपको इसमें समझ के और अच्छे से लिखना है। अपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो लिखना है। मेन आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रही, आपने कहाँ कहाँ वर्क, क्या क्या स्किल्स है, ओके। सो वो सारी चीजें इस कवर लेटर में एड ऑन करनी है। देन इसको इतना मजबूत बनाना है, अपने एक्सपीरियंस से, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। इसको इतना मजबूत मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बनाना अपना कवर लेटर, कि जो भी इंटरव्यूअर हो, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हो, उन पे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़े, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है, लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू यूजिंग कॉमन क्वेश्चन। ओके, जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं उनके थ्रू आगे हम ये आपकी एक्टिविटी बुक में सीखेंगे, ओके। सो जो क्वेश्चन के आंसर कैसे देना उसकी आपको तैयारी करनी है। ऑलरेडी आप उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी आपसे मिस्टेक्स ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, ओके स्टूडेंट्स लर्नर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी पहले से ही कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन के आंसर है। और हाँ, जो भी ये क्वेश्चन के आंसर है उसकी मैं पीडीएफ की लिंक शेयर करूंगी, तो उसको चेकआउट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन के आंसर मैंने ऑलरेडी आपके लिए ऑनलाइन से सर्च करके आपके लिए पीडीएफ तैयार कर लिया, तो प्लीज चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ओके। इससे आपको काफी हेल्प होगी आपकी इस मॉड्यूल में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, है ना। नेक्स्ट आपका है पार्ट बी में, आपका आ जाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस ही करा है, कवर लेटर है। सो राइटिंग एक्सीलेंट कवर लेटर, उसके पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही दिए गए हैं, कैसे आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो इसको रीड करके आप अच्छे से कवर लेटर अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी में यही है, ठीक है। एंड क्रिएट अ टॉलरेट विजन फॉर ईच एप्लीकेशन, एड्रेस इट टू द हायरिंग, ओके। सो ये सारा है, ये सारी पॉइंट टू पॉइंट आपको रीड करना है केयरफुली, देन आपको अपना कवर लेटर तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Writing excellent cover letters, 475W. One of the most common mistakes people make is writing their cover letter as a summary of their resume. Recruiters receive large amounts of cover letters and don't want to read about where you went to school. What they want to know is where your school experiences have taken you. The cover letter is an opportunity for you to tell your story on your terms, and for you to share the aspects of yourself that you want your future employer to know. Below are 7 tips to consider for your cover letter. 1. Create a tailored version for each application. Whilst some of the content you include about yourself will always be relevant, make sure you are addressing the specifics of the job you are applying for. Share why you are excited about the role. 2. Address it to the hiring, recruiting manager. Where possible, try to address your letter to the hiring, recruiting manager using their name. It shows that you've taken the time to get to know who will be reading your cover letter, and that you are invested in applying for this role. 3. Explore your resume in more detail. The hiring, recruiting manager now knows the facts, so go deeper into what you have learned from past experiences. Highlight the most relevant examples while focusing your skills that can be utilized to do the job effectively. 4. State what you can do for the company. The company knows this role will be a great experience for you. What they want to know is what you are going to do for them. Think about areas where you can make an impact and what expertise you bring to those areas. Where possible, include numbers to demonstrate how you made a measurable impact at companies you have previously worked with. 5. Include a strong finish. This is your last opportunity to impress.
You can do this by including a strong closing sentence that emphasizes your excitement and passion, and states why you'd be a great addition to the company. 6. Ask a friend to read it. Having another perspective from someone who knows you well is a great final step. Your friends, family, and former colleagues will be able to add insight on other attributes you may have overlooked. 7. Make it look professional. First impressions count, so you want to make sure your letter is well formatted, with correct grammar and spelling. Make sure that the content is clear, concise, and relevant. This is your opportunity to share all the facts and elements that make you who you are, show why you are the perfect candidate for each position you apply for. स्टूडेंट्स पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में आपका है मोस्ट कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, 1 to 6 है क्वेश्चन है, और उनके आंसर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी कर सके। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। एंड और भी मैंने आपके लिए कुछ PDF तैयार किया है क्वेश्चन के आंसर, तो उसको भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे है व्हाट आर योर वीकनेस है, सेकंड है व्हाई शुड वी हायर यू, थर्ड है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, एंड फोर्थ व्हाट आर योर गोल्स, एंड फिफ्थ व्हाई डिड यू लीव, व्हाई आर यू लीविंग योर जॉब। ओके, जो कि आप जॉब पहले कर रहे थे, वो जॉब आप क्यों छोड़ना चाहते हो, क्यों आपने छोड़ा, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। देन सिक्स्थ है वेयर वेर यू मोस्ट सेटिस्फाइड विद योर जॉब। ओके, सो ये है, आपको इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करनी है। AC8SC Bullseye 74. Note regarding email cover letters. Email is still the most widely used tool for formal written communication across businesses and companies. Always make sure you include a subject line that informs the content of your message. Part C. 6 most common job interview questions, 411W. Here are some commonly asked questions you can expect to be asked in an interview. 1. What are your weaknesses? This is one of the more popular interview questions. Handle it by minimizing your weakness and emphasizing your strengths. Stay away from personal qualities and concentrate on professional traits. E.g., to become an effective presenter, I have been working on my communication skills. I recently joined Toastmasters, which I find very helpful. 2. Why should we hire you? Answer this question by summarizing your experiences. E.g., with 5 years experience in the financial industry and my proven record of saving the company money, I could make a big difference in your company. I'm confident I would be a great addition to your team. 3. Why do you want to work here? Many interviewers seek to evaluate whether or not a job is a good fit for a candidate. By asking you this question, the interviewer is listening to an answer that indicates you have given this some thought and are not sending out resumes just because there is an opening. E.g., I have read the testimonial on your web page which suggests that this is a great place to work where you empower your employees. 4. What are your goals? Here, it's best to talk about short-term and intermediate goals rather than locking yourself into the distant future. E.g., my immediate goal is to get a job in a growth-oriented company. In the long term, I hope to grow into a position of responsibility. 5. Why did you leave, or why are you leaving, your job? Important tip: don't badmouth a former employer. So if an interviewer asks this question, state your reason for leaving in a positive context. E.g., my true passion is in shaping the minds of young children. I love teaching but my career went in a different direction after college. Now, I'm ready to pursue a career in teaching, and I'm particularly excited by the opportunities your organization presents. 6. When were you most satisfied with your job? Through this question, the interviewer wants to know what motivates you. If you can relate an example of a job or project when you were excited, the interviewer will get an idea of your preferences. E.g., I'm a people person. I am happy and satisfied when I interact with customers and help them resolve their problems. It has been my favorite part of the job. 75. स्टूडेंट्स लर्नर, चलिए एक्टिविटी बुक चेकआउट कर लेते हैं क्विकली।
ओके, सो पार्ट ए में 14 यानी 1 to 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए 1 to 14 ये क्वेश्चन है जो कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा या होता है, सो उसमें कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन की आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी। हमने अभी वर्कबुक में देखा, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की। देन इसमें भी आपको सेम एज करनी है। देन आपको इसके आंसर राइट डाउन करने हैं। और मैंने भी आपके लिए कुछ क्रिएट करा है पीडीएफ, तो प्लीज आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ ब्रीफली। ओके, सो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। डिस्क्राइब हु यू आर और टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एचआर पूछ सकते हैं जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके, ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ आपको सिखाया जा सकता है फैसिलिटेटर के थ्रू, और ये आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग हो सकता है इन एफए में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चेकआउट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। Ever faced an HR interview before? In case you haven't, I am sure that you might face one soon enough. In order to help you prepare, we have curated this article which covers some of the most frequently asked HR interview questions. 1. Tell me something about yourself briefly. 2. Describe who you are. Or tell me about your background. 3. What are your strengths and weaknesses? 4. What makes you happy? 5. What motivates you? 6. What are your hobbies? Or what are you passionate about? 7. What are your biggest achievements till date? 8. What has been your greatest failure? 9. What is your greatest fear? 10. What makes you angry? 11. What do you regret? Or do you have any regrets? 12. What do your friends, co-workers say about you? 13. What did you do in the last year to improve your knowledge? 14. How quickly do you adapt to new technology? 15. What software packages are you familiar with? 16. Are you open to taking risks? Elaborate. 17. What makes you experiment? 18. How do you respond to change? 19. Describe your time management skills. 20. Give me an example of your creativity. 21. Are you willing to relocate or travel? 22. How do you deal with feedback and criticism? 23. Why should we hire you? 24. What is your ideal company or workplace? 25. What was the toughest decision you ever made? 26. How do you work under pressure? 27. What are your future goals? Tell me about your short-term and long-term goals. 28. What are the 3 things that are most important for you in a job? 29. What do you know about us or our company? 30. Why do you want to work for us or our company? Or why do you want this job? 31. If I call up your current or previous reporting manager now, what will be their opinion about you? What will they say that you need to work on? 32. On a scale of 1 to 10, how would you rate yourself as a leader? 33. You have changed jobs, jumped ship too many times already, why so? 34. What is the most difficult thing that you've ever accomplished? 35. What is the difference between hard work and smart work? 36. Where do you see yourself 3/5 of a year from now? 37. Give an example if you had to respond to an unhappy manager, customer, professor, friend. 38. What are your salary expectations? 39. Why do you want to leave your current job? 40. Your interview is more or less coming to an end when the interviewer asks you, do you have any questions for me? 92. Part B. Mubarak. सिचुएशन, चलिए अब आगे देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट करके ऑलरेडी रखा है। पार्ट बी में आपका मुबारक कॉन्सेप्ट सबमिशन से रिलेटेड है। कवर लेटर आपको सबमिट करना है, आपका जो भी मुबारक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल में है। सो उसको आपको राइट डाउन करके सबमिशन करना है। ओके, सो ये आपसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट आपका है पार्ट सी में। ओके, पार्ट सी में है
इंटरव्यू से रिलेटेड है कॉमन आस्क क्वेश्चन, जो भी हमने अभी डिस्कस किया, देन आपको उसकी जो आंसर है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है अपने वे में। ओके, जो भी आपने प्रैक्टिस करी है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट आर 3 पॉजिटिव थिंग्स योर लास्ट बॉस। ओके, जो भी आपका जो वर्क प्लेस था उसमें आपका बॉस से रिलेटेड है, आपका बॉस से रिलेटेड पूछा जा रहा है, उनके जो भी लास्ट बॉस थे आपके, जो भी वर्क प्लेस पे, उनके बारे में 5 पॉजिटिव थिंग आपको राइट डाउन करना है। देन टीचर वुड से अबाउट यू। ओके, और जो भी स्कूल कॉलेजेस में आप हो, आपके बारे में कोई भी किसी टीचर ने कोई भी चीज आपके बारे में जो कही है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके स्टूडेंट्स, लर्नर, देन लास्ट ऑफ द वीडियो है आपका क्विज है पार्ट डी में 1 to 10 है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। सो प्लीज आप फर्स्ट अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, देन कुछ भी मिस आउट हो जाता है तो प्लीज आप इसमें से चेकआउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के मॉड्यूल में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।